So friends, Namaskar and good day to all viewers. I am Engineer Sandeep Bansal, General Secretary of Council of Engineers and Valuers, once again in front of you with one more very interesting and useful video for your professional life. So how to get the article related to this video, you have to log into cevnews.in. I will tell you the procedure step by step. When you log into cevnews.in, this window will open. CTN Press. This is the official website of Council of Engineers and Valuers, and articles and study materials and various other information related to engineers and valuers are being published on this platform regularly. And also the employment notices and employment information and list of employment valuers are also published regularly on this platform. You need to scroll it down. You will find the YouTube panel on it. You will find various interesting videos in this panel. You want to subscribe the YouTube channel, then you need to click on this subscribe button, or you can click on the load more button. You will find more related and interesting videos for your professional upliftment. It is the latest. This is the latest news panel. Here you will find various news articles which are published recently. Now, let's come to the point. Today we will discuss a very interesting topic that is what professionals look for in a registered valuer organization, RVO. I repeat, what professionals look for in a registered valuers organization. Let's click on this article. This window will open. So this is the topic for discussion in today's presentation. What professionals look for in a registered valuer organization: compliance, transparency, support, and training, and how it affect on your choice. Here, I would like to appraise CEV Integral Appraiser Foundation, one of the best RVO in India. What the Google search engine reflects about CEV IAF RVO. We have prepared one detailed video on this topic, what the Google search engine reflects about CEV IAF RVO, empowering engineers and valuers across India. Now, let's stick to the main topic of discussion today. What professionals look for in a registered valuer organization, that is RVO. A comparative, practitioner-oriented perspective for engineers and valuers. In the evolving ecosystem of insolvency, banking, financial institutions, and regulatory valuation, the choice of a registered valuer organization is no longer a mere procedural requirement. It is not a formality now. It is a strategic professional decision. For engineers and valuers registered or aspiring to register with the Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI, and RVO becomes a long-term institutional partner that shapes competence, credibility, and career trajectory. So friends, based on industry interactions, regulatory expectations, and practitioners' experience, the following comparative framework outlines what professionals genuinely look for in an RVO and why these factors matters in the real world practice. So see here, number one, we will discuss about the regulatory alignment and compliance culture. Here, what professionals look for in an RVO, what professionals try to find out. Strictly adherence to IBBI valuation rules, regulations, and circulars. The valuer should follow strictly the IBBI valuation rules, regulations, and circulars. The RVO should be having strong internal compliance and SOP-driven functioning. Proactive
dissemination of regulatory updates. Why it matters? Why regulatory alignment and compliance culture matters? Insolvency proceedings, bank empanelments, and litigation increasingly scrutinize the conduct and compliance culture of valuers. Professionals prefer RVO that act and compliance guide rather than mere registrars. No one will prefer only the registrar. आपने फॉर्म दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, दैट्स ऑल, खत्म काम. यहां से नहीं, यहां से तो आपकी लाइफ शुरू होती है. रेगुलेटरी अलाइनमेंट एंड कॉम्प्लायंस कल्चर होना चाहिए. इट शुड स्ट्रिक्टली adhere the IBBA valuation rules, regulations and circulars. Strongly internal compliance होना चाहिए. Proactive dissemination of regulatory updates होना चाहिए. Regular आपको अपडेट देते रहना चाहिए. So what is the professional insight? An RVO compliance discipline often reflects in how its members are perceived by banks, NCLT and regulators. आपके members को बैंक्स की तरफ से, एनसीएलटी की तरफ से और रेगुलेटर्स की तरफ से किस तरह से देखा जाता है. So, say here, second, point number 2 is quality of education, CPs and continuous learning. What professional look for? Regular, affordable and relevant continuing education programs, CEPs. Coverage of practical issues, depanelment risks, report writing, inspections, valuation disputes. Faculty with real field insolvency and banking experience. Why it matters? Valuation is no longer static or formula driven. Professionals value RVO that prepare them for live assignments, regulatory inspections, and cross-examination scenarios. Comparative reality. A generic RVO approach and a progressive RVO approach. What is the difference between the two? In a generic RVO, formal and it will be a formal and exam oriented only. Whereas the progressive RVO approach will be practice driven and case based. Here in normal RVO, infrequent CPs will be there. In a progressive RVO, regular CP will be there, and that will also be a low cost CP. It is theory and heavy. Here, real life illustrations. It should also cover the practical issues. Depanelment risk, आपको अगर depanelment कहीं से हुआ है तो वो पहले आपको कैसे हो सकता है, क्या उसके reasons हो सकते हैं, क्या उसकी precautions हो सकते हैं, आपको बताए. रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं वो बताए. इंस्पेक्शंस कैसे करते हैं, कैसे इंस्पेक्शन हो सकती है, साइट इंस्पेक्शन कैसे होगी, क्या उसकी चेकलिस्ट होगी, वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स अगर पड़ते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करना है, ये बताए. सिर्फ गूगल पेस्ट का कॉपी पेस्ट मास्टर बन के आपको वहां पर दे दिया और चले गए, दैट्स ऑल. या फिर कभी आपके साथ कोई डिपेनलमेंट हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई शो को नोटिस आया तो आपको बोले भाई ये तो आपका पर्सनल मैटर है, आप खुद हैंडल करिए. नो, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि आपको उसके लिए प्रिपेयर करे और सबसे बड़ी बात है आपको बचाए. उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, वो पहले से ही आपको बताए सो दैट कि आप कॉशन, ड्राइव विद कॉशन करें. आपको वार्न करें कि क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा हुआ भी है, हो गया है कभी जाने अनजाने में, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे और आपकी पूरी हेल्प करे और सपोर्ट करे कि आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं अगर आप सही हैं तो. नेक्स्ट, प्रोफेशनल प्रोटेक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. That's what I was discussing about. What professionals look for? Guidance on show cause notices, inspections, and disciplinary processes. Awareness sessions on depanelment, negligence, and liability risk. Ethical hand-holding without compromising regulatory independence. These 3 points are very important. Why it matters? With increasing
scrutiny by banks and authorities. Valuers seek RVOs that educate them on risk prevention, not just post facto compliance. देखिए, जब भी कोई भी गलती होने वाली होती है, पहले ही आपको वार्न करे, पहले ही आपको बताए, पहले ही आपको एजुकेट करे, पहले ही आपको लर्निंग सेशन में पूरा का पूरा बताए कि क्या क्या हो सकता है, रिस्क कहां से हो सकता है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। ना कि सब कुछ काम खत्म होने के बाद में आपको आपको सिर्फ एक शो कॉज नोटिस भेज दे या आपकी डिपेनलमेंट हो गई है तो आपको बोले भाई आपका पर्सनल मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। नो, दैट शुड नॉट बी द अप्रोच ऑफ अ proper organization. Now, what is the practitioner expectation? A good RVO should help members avoid mistakes, not merely penalize them for errors. That is the biggest point of expectation. आपको मिस्टेक होने से पहले ही आपको वार्न करना है और आपको इस तरह से ट्रेन करना है कि आप मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ना कि अगर मिस्टेक हो जाए तो आपको पेनलाइज करना। Accessibility, affordability, and inclusiveness. What professionals look for? Reasonable membership and CEP fees. Equal access for small town, young, and first generation professionals. Digital participation options. एसेसिबिलिटी होना चाहिए, आरवीओ आपके लिए एसेसिबल होना चाहिए, आरवीओ के जो ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, एसेसिबल होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकें। अफोर्डेबल होना चाहिए, फी जो उसकी है, सीईपीज की है, मेंबरशिप की है, अदर फीस है, वो बिल्कुल अफोर्डेबल होना चाहिए। एक आम आदमी के लिए भी वो इतना महंगा ना हो कि वो उसको अफोर्ड ना कर सके। एंड इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। व्हाई इट मैटर्स? द वैल्यूएशन प्रोफेशन इन इंडिया इज डाइवर्स। Engineers from tier 2 and tier 3 cities increasingly seek RVOs that are inclusive, not elitist. So, fifth, say transparency, governance, and trust. That is also an important point professionals look for. What professionals look for? Clear communication of policies and decisions, transparent fee structure, ethical governance, and accountability. These are very important points that professionals look for. Why it matters? An RVO, internal governance, reflects its internal credibility. Professionals align themselves with institutions that demonstrate fairness, predictability, and integrity. कोई भी डिसीजन लेना है, उनका डिसीजन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, इमीडिएट डिसीजन होना चाहिए, पॉलिसीज उनकी क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर होना चाहिए, शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द वेबसाइट क्लियरली इन द ट्रांसपेरेंट मैनर, एथिकल गवर्नेंस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। These are the few things that professionals look for. Next, point number 6, networking, visibility, and industry interface. What professionals look for? Interaction with banks, insolvency professionals, lawyers, and regulators. Organization must be a platform for thorough leadership, thought leadership, and publication. It should be a platform for thoughts, leadership, and publications. Recognition of professional contributions. Why it matters? Valuation today operates at an intersection of law, finance, engineering, and economics. RVO that facilitate interdisciplinary exposure significantly enhance members' visibility. So these points are very important. Networking, visibility, and industry interface.
Now, point number 7, see here. Technological orientation and modern tools. What professionals look for? Awareness of valuation software and digital documentation. Guidelines on data security and report standardization. Support for online learning and digital records. These are the few things that professionals look for. Why it matters? Digitization in banking and insolvency process demands that valuers remain technologically competent and documentation ready. So awareness of technological orientation and modern tools must be there. And they must educate their members to learn various techniques to upgrade their knowledge and their skills about these topics. Now, point number 8, institutional vision and long-term commitment. What professionals look for? Clear mission aligned with nation building and professional ethics. That should be the clear mission होना चाहिए उनका, जो nation building और professional ethics के ऊपर ही depend होना चाहिए. Focus on long-term capacity building, not short-term gains. The RVO should, or the organization should focus on long-term capacity building, not on short-term gains. And contribution to the evaluation of valuation standards in India. That is the most important point. Why it matters? Professionals increasingly associate themselves with RVOs that stand for institutional legacy, not transactional membership. Now, summary box. What truly differentiate a trusted RVO? Regulatory discipline with human guidance, education rooted in practice and prevention, affordable, inclusive, and accessible system, ethical governance and transparent process, commitment to professional dignity and national valuation standards. So I have summarized these 5 points that are very important to be there if you are choosing an RVO for your career. Now, let's go beyond this topic. How CEV aligns these professional expectations. A practice-oriented illustration for valuation community about CEV organization. The above expectations are not merely theoretical benchmarks. They find tangible expectation. They find tangible expression in the functioning of CEV Integral Appraiser Foundation RVO, which has steadily emerged as a most preferred professional home for engineers and valuers across India, across the country. So what are these things? What are the positive things in CEV? Because of them, most of the professionals are choosing this RVO to be a part of it. Number 1, regulatory discipline with human guidance. CEV IAF RVO maintains strict alignment with IBBA regulations while simultaneously guiding members through compliance requirements. Regular circular explanations, inspection, preparedness sessions, and depanelment awareness. CPs help members to avoid regulatory pitfalls rather than react to them post facto. सीवी में रेगुलर सीपीज होती रहती हैं जो कि डिफरेंट जो करंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर होती है, जिसमें आपको रेगुलर सेशन इंस्पेक्शन से रिलेटेड होते हैं, जितने सर्कुलर्स कहीं से भी इश्यू होते हैं किसी बैंक से, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से या किसी अथॉरिटी से या किसी ट्रिब्यूनल से, उनके बारे में आपको रेगुलर सीपीज में जानकारी दी जाती है, डीपेनलमेंट अवेयरनेस दी जाती है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपको डूज एंड डोंट्स हैं, आपको डीपेनलमेंट बचाने के लिए आप क्या क्या गलतियां जो हैं वो आप सुधार सकते हैं टाइमली, ये सारी चीजें आपको रेगुलर आपको बताई जाती हैं.
regulatory discipline with human guidance. Next is education rooted in practice, not just theory. CEV's CP ecosystem focuses on real-world valuation challenges, bank empanelment risks, report writing scrutiny, cross-examination preparedness, industrial process understanding, and sector-specific case studies. This practical orientation directly mirrors that professional seeks them a progressive RVO. सो सीपीज में आपको इन सब चीजों से रिलेटेड गाइडेंस मिलनी चाहिए जो सीवी में आपको रेगुलर दी जाती। सीवी में कोई भी ऐसी सीपी नहीं होती जो जस्ट गूगल कॉपी पेस्ट होती है। गूगल से कॉपी पेस्ट करके आपको बताया जाए और बताने के बाद जो इंस्ट्रक्टर हो वो चला जाए, और जाने के बाद या जाने से पहले आप अगर उनसे पूछें कि सर मुझे ये समझ नहीं लगा, तो वो थोड़ा सा नाराज हो जाए या परेशान हो जाए। ऐसा नहीं, आपको रेगुलर हर चीज के बारे में जानकारी और प्रिसाइज जानकारी आपको मिलती रहनी चाहिए। Affordable and inclusive professional development. With nominal membership fees and low-cost CEPs, CEV IF RVO ensures that valuation education remains accessible to professionals from Tier 2 and Tier 3 cities, first-generation valuers and young engineers without compromising on quality or compliance. सीबी की जो मेंबरशिप फीस है और सीईपी की फीस है बहुत नॉमिनल है मेंबर्स के लिए, और टीयर 2 और टीयर 3 के जो सिटीज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत अफोर्डेबल है, और उस नई जनरेशन के जो वैल्यूअर्स हैं उनको इसमें ज्वाइन करने में ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कल्चर इन सीईवी। See here, CEV actively promotes interaction with senior valuers, bankers, insolvency professionals, and subject experts. Sessions such as CEV की पाठशाला, चाय पर चर्चा, exemplify its commitment to mentorship-driven learning and institutional wisdom sharing. सीवी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, सीवी की पाठशाला एक शुरू की गई है जो कि एक लोकल लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में होती है, उसको चाय पर चर्चा भी आप कह सकते हैं। उसमें आपसे आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो आप उसको वहां पर उठा सकते हैं। उसके बारे में आपको बैंकर्स, वैल्यूअर्स, सीनियर वैल्यूअर्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और डिफरेंट एक्सपर्ट्स या फैकल्टी मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। वो आपकी कोई भी उससे मिलती जुलती कोई भी समस्या होती है उस पर चर्चा की जाती है, और आपको उस पैनल से आपको उस पैनल की तरफ से गाइडलाइंस या आपको हेल्प करने की कोशिश की जाती है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको पूरा सॉल्यूशन मिले, या आपका जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से उसको सॉर्ट आउट करके उसका क्या सॉल्यूशन बन सकता है, क्या पॉसिबल उसका आगे आप उसके लिए कर सकते हैं, वो आपको बताया जाए। और वहां पर आपके जैसे ही सभी प्रोफेशनल्स होते हैं तो आपकी समस्या को प्रॉपरली समझ पाते हैं, ना कि कोई गूगल से कॉपी पेस्ट करके वहां पर उठाकर लेके आने वाला है। लाइव डिस्कशन फैसिलिटी है सीवी की पाठशाला में, उसको हम शॉर्ट में चाय पर चर्चा कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस एंड एथिकल ओरिएंटेशन। पॉइंट नंबर 5, क्लियर कम्युनिकेशन, predictable process, and ethical governance from the foundation of CEV IF RVO credibility. So, clear communication, predictable process, and ethical governance form the foundation of CEV IF RVO credibility. Members associate the organization with trust, fairness, and professional dignity. Qualities increasingly valued by banks and authorities. Members associate the organization with trust, fairness, and professional dignity. These are the qualities increasingly valued by banks and authorities. Sixth, and the last point, national vision with grassroots connect.
While aligning with national regulatory objectives and global valuation standards, CEV IAF RVO remains deeply connected to grassroots professionals, ensuring that policy, practice, and professional evolve together. Regulatory ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स और ग्लोबल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के साथ साथ सीईवी हमेशा अपने ग्रास रूट प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ा रहता है, ensuring that policy, practice and professional evolve together. सबको साथ में लेकर चलना, सबके साथ मिलकर काम करना और सबकी प्रॉब्लम को सुनना, ये सीईवी की फर्स्ट प्रायोरिटी है. नेशनल विजन विद ग्रास रूट कनेक्ट. While aligning with the national regulatory objectives, the global valuation standards, CEV, IEF, RVO remain deeply connected to grassroots professionals, ensuring that policy, practice, and profession evolve together. Now, concluding perspective. Choosing an RVO is ultimately a choice of professionals' ecosystem. Choosing an RVO is ultimately a choice of a professional ecosystem. Engineers and valuers look beyond statutory registration to evaluate whether an RVO supports competence, credibility, confidence, and career sustainability. Engineers and valuers look beyond statutory registration to evaluate whether an RVO supports competence, credibility, confidence, and career sustainability. In a profession increasingly under regulatory and institutional scrutiny, the right RVO becomes a pillar of professional strength. As the valuation landscape matters, professionals gravitate towards organizations that balance regulatory compliance with mentorship, education with ethics, and discipline with development. These are the pillars of choosing the best RVO by any professional. So friends, this is all from my side. I wish you all the best for your and success for your professional journey. Good luck, goodbye, keep learning, stay safe, and please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. This is all from my side for this presentation. Thank you very much.